All right, guys, so let's officially start the session. Before I begin with the session, feel free to use the chat box to ask questions as we proceed forward. ताकि हम लोग साथ साथ में आंसर भी कर सकें, आप लोग का कोई क्वेश्चन मिस ना हो और आप लोग की सारी क्वेरीज भी दूर हो जाए. So yeah, we encourage you guys to use the chat box ताकि you guys can interact with each other, talk to each other, and truly make this an inclusive environment. So once again, welcome. Let's begin with blockchain basics and the real world use cases. The basic goal of this session is to truly move beyond understanding just blockchain and finding out what value it can truly add into our ecosystem. हमारे सेशन का पर्पस ये है कि हम समझ सके कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे होते हैं ऑन एवरीडे बेसिस, in general, in our community, in our environment, we figure out कि ब्लॉकचेन के थ्रू हम कैसे वो चीजें सॉल्व कर सकते हैं. एंड रादर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग थ्योरी, हम एक्चुअल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सीखें. एंड बाय द एंड ऑफ दिस फेलोशिप वी आर एबल टू क्रिएट रियल लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट्स. So that's something that we're doing. So the agenda for today is just, give you guys a brief overview of what blockchain is all about, what you guys can really build on blockchain, because हमारे last session में सबसे ज़्यादा questions ये आए थे कि हम लोग अलग-अलग background से आए हुए हैं. Someone is a trader, someone was from a marketing background. तो हम कैसे build कर सकते हैं, किस industries में tap in कर सकते हैं, कहाँ से समझ सकते हैं blockchain is about, कहाँ से समझ सकते हैं किस तरह की यूज केसेस ब्लॉकचेन पे बिल्ड हो सकते हैं. सो दैट्स समथिंग दैट वील बी टेलिंग यू अबाउट. वील बी टेलिंग यू कि ब्लॉकचेन इन इटसेल्फ कैसे काम करती है. सो आई नो बहुत से लोग ऐसे होंगे हु वुड नॉट हैव रियली टेक्निकल बैकग्राउंड या ब्लॉकचेन पे उनने कभी बिल्ड नहीं किया होगा. So we want to explain what blockchain is as well. And then we just want to show you a couple of Algorand use cases जो real world में impact create कर रहे हैं globally Algorand पे build करते हुए, so that it can be an inspiration for you guys as well, to really understand किस तरह के projects you guys build, and you guys can work through that, get your ideas, start your ideation, understand what all Algorand is all about, understand what sort of an ecosystem this is, and then obviously we'll be discussing the overview, what the next steps are, all of these things. All right. So as we move forward, let me give you guys a quick recap of what our first session was about. We had a basic orientation, based on what Algorand is. We understand that it's low cost, it's fast, it's secure, it has instant finality, and it uses a unique pure proof of stake consensus mechanism. Now, what is this? It is basically automatic validation towards whatever transactions are going on, which makes, all the transactions on Algorand much more efficient and sustainable as well. So before we dive into, how you can build on Algorand and what it's all about, the question arises on what blockchain is. Blockchain kya hai? Blockchain is a type of distributed digital ledger. Now, एक ledger क्या होता है? एक ledger is just like a notebook, right? So blockchain is a shared notebook. It's very secure. And सिर्फ एक बंदे के पास ये नहीं होती. This is with everyone. Like thousands of computers have, access to this specific notebook. And these computers are referred to as nodes, and all of these notebooks have their own identical copy. So now ये काम कैसे करता है? Let me first run you through a couple of terminologies, right? So what are blocks? Block पे वो चीजें होती हैं. It's so basically, it's whatever transaction you're doing, it's stored in a block. So आपका जो data store होता है, it's stored in one single block. And for every block of code that you do, there is a certain hash that is assigned to that specific block. अब ये सारे ब्लॉक्स जिस तरह से कंबाइन हो रहे होते हैं और जिस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, this is what makes it into a chain. So blockchain is basically a chain of the different types of blocks. And then what is decentralization? Decentralization is that every individual person has their own ownership. So no single company or government or, no single person has complete ownership of this. Now,
how does this really work? So I mentioned कि hashes होते हैं blockchain में, right? So let's say आपका जो first block है, the one that does not have any previous block associated to it, this is called a genesis block. अब as you proceed forward, आप अपना code का अगला block जैसे ही code like transaction आप blockchain वो block डालते हैं, it automatically connects it to the previous hash, and then it creates a new hash for it, which automatically, creates a sort of chain reaction, which makes blockchain immutable, much more secure, and much more transparent. What do I mean by immutable? By immutable, I mean that no other person can change that specific block. जब वो block का आपने code लिख दिया है, when you're done with writing that block, when that transaction is completed, no one will be able to change that. Because obviously एक specific hash जब assign हो जाता है, say even if let's say you change one hash, एक block का आप hash change कर दे, so changing all the hashes in the entire chain of that blockchain, I'm so sorry. So changing all the hashes through that entire chain becomes a really lengthy process, and you cannot obviously dedicate that much time, which makes blockchain very, very immutable and completely secure and safe. Now, security is तरह enhance होती है because obviously वो single hash code, obviously सामने वाले बंदे के पास चला जाता है. It shows complete transparency. No one can get into it. No one can, really hack into that system, which makes it much more secure and obviously transparent because everyone has access to that digital record, which is obviously the core characteristics of blockchain. So a lot of times, a lot of people really, asked how, blockchain is related to crypto and it's all about trading and all of those things. But blockchain has a lot of uses even beyond crypto. It's not just about trading, but it's a complete different avenue that opens so many opportunities for everyone. It gives you proof of ownership. So you can use blockchain to create a permanent and verifiable record of ownership for both digital and physical assets. And how do you do that? You can do that through, intellectual property and through code. And because you write your own code and because it is being validated for others, it completely eliminates the intermediaries. So koi teesra banda, no third person is getting involved into your transaction. And obviously, let's say you need to make a transaction, you need to purchase a property. If you're doing that through blockchain, the best part about that is all the legalities, all the signings, you don't really need to do that. So it creates a new system of trust where people are able to interact with each other without needing a third person and having that sort of reliability कि भाई यहाँ पे इतने मसले नहीं create होंगे. It gives an entire avenue to really build trust. And that is basically the main reason why a lot of businesses should shift more from off-chain to on-chain as well. For example, you're working with a client right now. How does that client really trust you? Let's say you need to make a payment. Let's say, you have to give someone money, but they don't know you, you don't know them. So how do they trust you? Blockchain gives that sort of reliability. It boosts efficiency, it reduces costs because algorithm ye claim karta hai कि we give instant finality. So once you write a code in a block, it is locked in that instant. And obviously, it has a very low gas fees, which reduces the cost of all of that transaction, all of that transaction cost. Other than that, it also enhances the security and data integrity. How does it do that? With its decentralized structure. So obviously, blockchain uses advanced cryptography, which, has all the transactions in it, and it's resistant to hacking, as I just mentioned, because, it's completely immutable. So once a data is recorded, it cannot be changed, which enhances the security, enhances the security of that specific data as well.
And other than that, blockchain opens a complete new avenue of opportunities, as I mentioned. So let's say, you want to enter into real estate, you want to do some sort of investments. That is something that tokenization can also help you with. It can open opportunities by getting assets. And obviously, this is something we'll be, focusing on later on as well. I'll be explaining, we'll be explaining tokenization even further. But then it opens a complete new avenue of opportunities where it increases ownership, it increases, liquidity, it gives you an access to create new and much more global markets rather than just sticking to one specific place. Um, so it really helps you build that level of trust and transparency, as I've mentioned before as well. So we've talked about all of this, but a lot of questions really arise in terms of what industries one can explore when they're talking about. Guys, are you facing a voice issue? Am I audible? Okay, perfect. Okay, thank you so much, guys. All right. So, as we were talking about the different industries that we can explore, there are so many opportunities. There are so many use cases that have been built on Algorand that we'll be talking about even more. There are so many industries to explore to really get into how blockchain can create long-term impact for the people, specifically in Pakistan as well. So there's the fintech industry, there's the health tech industry, there's the supply chain industry, there's the ESG industry. You can provide humanitarian aid, you can give identity systems. There are so many things you can do in blockchain, while there are so many opportunities that we're going to be discussing. So we're going to be थोड़ा सा मैं इंडस्ट्री वाइज टैप इन करना चाहूंगी, ताकि मैं आप लोगों को उस इंडस्ट्री की इनसाइट्स दे सकूं, सो दैट व्हेन यू गाइस गेट इनटू योर रिसर्च आप लोगों को पता हो कि कितनी बड़ी मार्केट है और कितना हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? So which is why, as I proceed forward with all the industries, I'd want to give you an overview of those industries as well. So let's start with the fintech and payments industry. So as per data, this is a $1.6 trillion industry that will go to this value by 2034, and it is a huge opportunity, especially in Pakistan, जहाँ पे लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास एक्सेस नहीं है टू फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेसिफिकली इन आवर रूरल एरियाज. हमारे अगर अर्बन पॉपुलेशन के पास एक्सेस आ भी जाता है, बहुत से टाइम्स हमारे रूरल एरियाज वालों के पास नहीं आता, एंड दे लूज आउट ऑन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दैट. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट ब्लॉकचेन is able to solve and has been doing. उसके अलावा, when we talk about payments, when we talk about liquidation, asset tokenization is something that pops right into our minds, because हमारे जो real world assets हैं उनकी value के basis में we can create digital tokens जहाँ पे people will be able to invest much more seamlessly. We can engage in cross border payments. आपकी अगर assets पाकिस्तान में है, जो आपकी remittances बाहर से आनी है, let's say families यहाँ पे हैं, there are people abroad sending their family money back because Pakistan is a developing country. यहाँ पे बहुत सी families के साथ ये हो रहा होता है, right? But we don't really have any sort of platform जहाँ पे ये बहुत seamlessly हो जाए, without all the taxation cards, without taking 2-3 days. किसी को emergency funds चाहिए, so we don't really have access to that. So that is something that blockchain can provide to us. And other than that, there's also national currencies. So while focusing on national currencies, let me take you to a real world use cases of the Marshall Islands. This is an island in America that really wanted to have its own digital currency, and they're currently building on Algorand. They've chosen Algorand as a platform build their digital currency. And what this really does, since it's a very small island, it's a sovereign island,
that wanted a globally compliant digital currency, it built on Algorand and it's completing all of its transactions through Algorand. It chose Algorand, to power its national currency. And Algorand's consensus mechanism is making sure that this happens with security and stability, because we've not had downtimes, you know, quite a long time, like for the past 5 years almost. And then obviously it gives an access to institutional readiness. Now, what do I really mean by that? So, it really proves its capability by handling governmental grade financial applications as well. Because Puri, Marshall Islands is like a small country in itself, और उसकी सारी transactions power हो रही है digital currency के through. चाहे something as small as grocery, that's also being done digitally, and that's the type of ecosystem and environment we want to bring to Pakistan as well. And as we move forward, let me also shed light upon Hisab Pay. What it's truly enabling, and it's truly enabling people in Afghanistan to conduct digital payments, through financial transactions, through daily transactions. It's helping people provide financial aid. And I think you've all heard about Easy Paisa and Jazz Cash, right? But it's doing that on blockchain much more securely and much more, transparently. And it's so much more reliable because it has enabled people to really, do those direct payments, and it has a certain verifiable record and obviously low fee, because Algorand gas fee is really low, as compared to other blockchains as well. So it's really creating that level of ecosystem where it's enabling people to become more tech savvy. It's helping people go through and conduct transactions, and every transaction is recorded on the Algorand blockchain, which makes it much more immutable as well. So that's something, this is a project that's truly revolutionizing digital payments across Afghanistan. And being a developing country, I think Pakistan definitely needs some sort of an ecosystem like this as well. So we've talked about fintech, we've talked about the payments industry as a whole. I also mentioned the real estate industry, and honestly, this is also a huge industry that we can tap into. Pakistan, we have so many platforms, we have so much real estate, that's constantly getting changed, and obviously opportunities are endless. I talked about tokenization. So obviously it enables fractional ownership. What people can really do is, let's say, I'm going to give you a very brief example, a very basic example. Let's say एक plot खरीदना है हमें, सही है, and I'm going to give you a very rough estimated value. Let's say $1,000 का वो plot है, सही है. But when you want to go and purchase that, you need to, give that full amount. You cannot get any sort of fractional ownership. So something that we can do through blockchain is enabling tokenized payments. Let's say आप उसका 10% खरीद लो, आप उसका 20% खरीद लो, and you get a token for that specific value. This obviously helps you increase your liquidity as well, because if you want to exchange that token, it's much more seamless because it has a lesser value than massive investments. It has reduced costs because all your legal expenditures, all your administrative expenditures, जो आपको अलग-अलग offices में जाके चक्कर लगाने पड़ते हैं, all of this gets completely removed because आपकी intermediaries हट जाती है. And this also gives access to the global community and the global market to, come into Pakistan and invest in Pakistan. So, it's a huge opportunity. And let me run you through an existing case in Algorand that is working on fractional home ownership, which is Lofty. So what Lofty is doing is it's using the Algorand blockchain to tokenize real estate, where, they're enabling people to purchase tokens for as little as $50. Now, this gives them digital shares. This gives them access to an asset and a property that can be their investment. It truly enables them to, become much more financially independent through these investments. And let's say if it's a rental property, it helps them earn a passive income,
वो रेंट कमा सकते हैं, वो साइड इनकम कमा सकते हैं। अगर उनके पास एक प्रॉपर्टी है जो रेंट पे जा रही है, लेट्स से आप फुल एयरबीएनबी नहीं खरीद सकते, आपने एक रेंट पे पार्शियल ओनरशिप में ले लिया, सो आपको उसका रेंट मिल जाए। सो इट ओपन्स न्यू एवेन्यूज। एंड ऑब्वियसली अगर आपने सिर्फ $50 इन्वेस्ट करे हैं, selling your share will be much more easier. Let's say आपने उसको $60 या $70 का बेच दिया, आपको फिर भी प्रॉफिट मिल गया। एंड ऑब्वियसली ये एक ऐसी अमाउंट है जो लोग खरीद सकते हैं, राइट? लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट ब्लॉकचेन इज आल्सो enabling you all to do. And as we move forward, we see the health tech industry, पाकिस्तान का health ecosystem, we all know कि it's not up to that mark. बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो इनेबल कर सकें एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम, जो इनेबल कर सकें हमारे पास वो रिसर्च होना, वो क्लिनिकल ट्रायल्स होना, दैट ब्लॉकचेन कैन डू. It's a $1.5 trillion मार्केट बाय 2032. सो हम क्यों इस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे? सही है. हमारी the best part about this industry is कि all the patient records, all the data that's there, it will be tamper proof. कोई इसको छेड़ नहीं सकेगा. I'll try to speak थोड़ा सा और in Urdu as well, Abdullah, I'm so sorry. तो अगेन जैसे मैं बोल रही थी, इसको कोई छेड़ नहीं सकेगा, कोई चेंज नहीं कर सकेगा इस डेटा को. आपकी जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स होंगे, जो उनके ब्लड टेस्ट के रिकॉर्ड्स हो गए, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जा रहे हैं, तो उस चीज को बहुत स्मूथली करना, उस चीज को सो दैट ऑल द डॉक्टर्स आर अवेयर सारे सिम्टम्स के बारे में, सारा पेशेंट रिकॉर्ड सबके पास हो, डेटा आपका डेटा इंटेग्रिटी आपकी रहे. जो भी आपके सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आप क्लिनिकल अगर ट्रायल्स कर रहे हो तो उसके जो सारे रिजल्ट्स हैं वो ग्लोबली एक्सेसिबल हो सके, लोग आपस में शेयर कर सके, कॉस्ट्स रिड्यूस हो सके. एंड ऑब्वियसली अगर हम फार्मास्यूटिकल साइड पे जाए, तो जो दवाइयाँ हैं उनकी जो पूरी ट्रांसफर है, उनको जो पूरा आपको देना है फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द एक्चुअल हॉस्पिटल्स, उसकी जो पूरी सप्लाई चेन है वो ट्रेस हो सकती है, विच मेक्स इट कंप्लीटली हार्म प्रूफ. आपके पेशेंट ज़्यादा सिक्योर रह सकते हैं, उसमें कोई चीज़ की मिलावट नहीं हो सकती. So that's something that blockchain also enables. And then a very prominent example of that is LabTrace. This is a global platform that's basically providing verified research data. Algorithm use करते हुए इन लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे वेरीफाइबल और टाइम स्टैम्प्ड डेटा है रिसर्च का. तो आपकी चाहे वो क्लिनिकल रिकॉर्ड्स हो, ये कंप्लीटली टैम्पर प्रूफ होंगे, तो कोई इनको चेंज नहीं कर सकता. लेट्स से ग्लोबली एक रिसर्च हुई है और पाकिस्तान में वो अभी तक रिसर्च नहीं हुई, मगर अगर ये डेटा एक्सेसिबल होगा और ये ब्लॉकचेन के थ्रू आया होगा, तो हमें पता है इसमें कोई टैम्परिंग नहीं हुई होगी, ये चेंज नहीं हुआ होगा, तो ये वेरीफाइबल डेटा होगा. तो ऑब्वियसली वो क्लिनिकल ट्रायल पे हम भरोसा भी कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट ब्लॉकचेन फैसिलिटेट्स. और उसके अलावा अगर यूएस में किसी ने किया है तो कोई उसको क्लेम नहीं कर सकेगा कि ये हमारी रिसर्च है. everyone will have their own intellectual property rights. जो भी रिसर्च हुई है, जो रिसर्च जैसे करी है, उसके राइट्स उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगे, which makes their data much more secure as well. So that's also something that blockchain enables you to do. And then as we move forward, we also see the supply chain industry. इसका example तो खैर we have a very prominent one. I'll come to that later. मगर उसमें end-to-end traceability है. It's a $32.7 billion market by 2032. पाकिस्तान में इतनी बड़ी organizations हैं, जिनको supply chain में बहुत सी help चाहिए होती है, जिनको ट्रैकिंग फीचर्स चाहिए होते हैं, जिनको हर चीज़ ट्रेस करनी होती है. लेट्स से आपकी B2B ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स से चीज़ें लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को चीज़ें देनी है, सप्लायर्स से चीज़ें लेनी है, उस चीज़ की ट्रेसेबिलिटी में आपकी हेल्प कर सकती है ब्लॉकचेन. आपकी जो फूड सेफ्टी इससे इनेबल हो सकती है. लेट्स से अगर आप कोई खाने की चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं,
तो उसमें मेकिंग श्योर कि वो टाइम पे पहुंचे, वो एक्सपायर होके ना पहुंचे, उसकी लेट्स से अगर हम पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस एंड हम फिश एक्सपोर्ट करते हैं, हम बहुत से फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेकिंग श्योर कि वो एक ऐसे टाइम पे पहुंचे जहाँ पे वो खराब ना हो. So that is something that blockchain can help us do as well. Ethical sourcing में it can help us, in terms of identifying कि वो raw materials कहाँ से आ रहे हैं, और obviously counterfeit चीजें नहीं आ सकेंगी हमारे, मतलब so many people it makes so many copies, वो इतनी copies बना के चीजें भेज देते हैं without any specific ट्रांसपेरेंसी इन देम. हमें नहीं पता होता वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या हो रहा है. So that is something that blockchain can help you solve. And one of the most prominent examples, I think, is one of the largest coffee companies, Lavazza, which is using Algorand to provide end-to-end traceability of all of its coffee blends. तो जो भी कस्टमर की जर्नी है, वो जब अपनी कॉफी खरीद रहा होता है लवाजा से, कॉफी बीन्स खरीद रहे हैं, ग्राउंड कॉफी खरीद रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरीफाइबल कंज्यूमर जर्नी. वो एक QR कोड स्कैन करके पूरी जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ से आई है और क्या मतलब किस कंज्यूमर के पास आई है. वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कहाँ से किस वेयर हाउस से आई है, क्या इसकी हिस्ट्री है. दे कैन कंफर्म कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, लवाजा का ही है. इट्स क्रिएटिंग अ जर्नी ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट, जिससे कंज्यूमर को पता है कि भाई ये लवाजा की ओरिजिनल है, एंड वट एवर द टेस्ट इज, वट एवर the quality checks are, everything is being done by Lavazza as well. And obviously this gives some sort of a sustainability proof as well, कि it makes sure that it provides information about that coffee as well, कि हाँ भाई एक sustainable origin से आई है, and it's something that you can use very regularly. And then obviously, I'll quickly start wrapping up the presentation. I'll just talk about the last use case that, is a part of this presentation, identity systems. Globally, 1.4 billion लोग are unbanked. सही है, वो अपनी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिससे वो, लेट्स से अगर किसी का राशन कार्ड बना हुआ होता है, ग्लोबली 1.4 बिलियन लोगों का नहीं बना हुआ, दे डोंट हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स का पता ही नहीं है जहाँ पे वो जाके ये चीज़ें कर सकते हैं. अगर आपने एक CNIC बनाना हो, उसके लिए इतना वेट होता है, उसके लिए आपको जाके इतने धक्के खाने पड़ते हैं. अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि a lot of people don't end up doing that, वो लोग वो चीज़ें नहीं करते. And then 98 बिलियन डॉलर्स की मार्केट वैल्यू हो जाएगी इस पूरी इंडस्ट्री की by 2030. एग्जैक्टली 1.4 बिलियन पीपल, उनके पास आइडेंटिटीज नहीं है, डिजिटल आइडेंटिटीज भी नहीं है बहुत से लोगों के पास. So obviously एक डिवाइड आ जाता है between the rural and urban population, where urban population के पास बहुत सी opportunities का access होता है, मगर बहुत से लोग rural population, because उनके पास ये मतलब उनके पास ये access ही नहीं होता, तो उनको बहुत सी opportunities नहीं मिल सकती. So blockchain can help empower these individuals in terms of giving them identities and making them identifiable in the systems as well. से कि आप सिस्टम में उनको आइडेंटिफाई कर सको कि भाई ये कौन से लोग हैं, उनको कंट्रोल दे सको अबाउट देयर ओन डेटा एंड देयर ओन आइडेंटिटी, जहाँ पे एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी एक्सेस सिस्टम बन जाता है, जहाँ जैसे मेरा अगर CNIC है, सो मेरी एक आइडेंटिटी बनी हुई होगी ऑन ब्लॉकचेन एज वेल, जो ग्लोबली वेरीफाइबल होगी. सो दैट ओपन्स द मार्केट अप टू सो मेनी न्यू एवेन्यूज, और बहुत से सर्विसेज स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, आपका फ्रॉड कॉम्बैट हो जाता है. लेट्स से अगर किसी ने फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बना लिए, वो ब्लॉकचेन पे नहीं बना सकेगा, वो ब्लॉकचेन पे फेक आइडेंटिटीज नहीं बना सकेगा. सो दैट इज समथिंग दैट ब्लॉकचेन रियली प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, वो उस फ्रॉड से हमें बचा लेता है. एंड देन an example for that is Flex ID, that's giving so many people in Africa a digital identity. So it's a platform that's built on Algorand, जो अफ्रीका में जो खुद लोग रह रहे हैं उनको एक डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे वो आके अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट
they're able to take loans, they're able to, apply to different bank accounts, they're able to apply for formal employments. अगर मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करूँ, सो ऑब्वियसली आई वुड नीड टू वेरीफाई कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है. सो देर आर सो मेनी पीपल जिनके पास ये एक्सेस ही नहीं होता, बिकॉज उनके पास आइडेंटिटीज क्रिएट नहीं हो सकती. सो दैट इज समथिंग दैट फ्लेक्स आईडी इज सॉल्विंग. इट्स क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी ऑन ब्लॉकचेन, ताकि लोग उसको ट्रस्ट कर सके, कंपनीज उसको ट्रस्ट कर सके, और लोगों ने परमिशन दी हुई है टू शेयर दोज दैट डेटा विद लेट्स से एम्प्लॉयर्स के साथ आपको शेयर कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज में अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बैंक के साथ वो डेटा शेयर हो सकता है. सो इट रियली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी विदाउट इन्वॉल्विंग ऑल दोज इंटरमीडियरीज, और इतने धक्के खाने के बजाय अगर हम एक डिजिटल सिस्टम क्रिएट कर दें for this governance, so why not? It's a huge opportunity to do that as well. So as I've mentioned, I hope that these use cases have really cleared what sort of projects Algorand and blockchain opens you up to, and it really opens up your mind in terms of thinking as well, कि आप लोग किस तरीके का प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज आगे जाके हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम किस तरीके के आइडियाज पे काम कर सकते हैं, हम सीख रहे होंगे हम कैसे वो प्रोजेक्ट्स बनाएं. तो आई रियली वांटेड कि मैं ये सेशन करूं ताकि आप लोग भी स्टार्ट कर दें टू रियली थिंक कि आप लोगों ने किस आइडिया पे काम करने हैं, आप लोग उसको आगे कैसे लेते हुए जा सकते हैं. So ताकि जब तक हम मूव फॉरवर्ड करें, आई कैन गिव यू एक्शनेबल स्टेप्स. I've also shared this in the Algorand developer portal, over your email, or abhi chat pe bhi, one of the co-hosts will share it. What I really want you all to do is to really explore this developer portal. Before hum aapko kuch bataye iske bare mein, I want you to understand it as a central hub for all the things that are related to Algorand. I want you guys to एक्सप्लोर इट एंड अंडरस्टैंड ये क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ये आप लोगों को ट्यूटोरियल्स देगा या आप लोगों को गाइड्स देगा टू हेल्प यू स्टार्ट. एंड ऑब्वियसली हम लोग भी आप लोगों को हेल्प कर होंगे, हम लोग आपको फैसिलिटेट कर होंगे इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट आई वुड रियली वांट यू ऑल टू एक्सप्लोर दिस योरसेल्फ एज वेल, ताकि बाय द टाइम वी start the actual sessions, you guys have a know-how on Algorand पे कैसे build करना है, right? And then obviously one of the biggest parts is to join our community. I've shared the WhatsApp link. The ambassadors have also given you all calls to confirm whether you guys are in the WhatsApp group or not. Because this WhatsApp group will be a community for you all to connect with each other, to get access to mentorship. All of us are in that group ताकि आप लोग हमसे बात कर सकें. You guys know that you guys are not alone in this, and we really want to help you throughout this entire journey. And our purpose is literally to just be there for all of you guys. चाहे आपको किसी भी चीज में help चाहिए while building on Algorand throughout this fellowship. So I would really urge कि आप लोग सब join करें WhatsApp community, and obviously follow all our social media accounts, so that you have access to all the latest updates, and we're now open to questions. I hope this session gave you insight into what sort of projects you guys can build, and it really clarified कि blockchain क्या impact create कर सकता है. So I think we're open to questions. If anyone wants to, unmute and ask a question, feel free to do that as well. We're here to answer those questions. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एआई एजेंट्स को ब्लॉकचेन पे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? These are all the things we will be teaching you guys as we proceed forward as well. So yeah, and obviously, So मार्केट बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसके ऊपर ना मार्केट बहुत जल्दी से इवॉल्व हो रही है और बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि ज़ेक चेन हो गई, इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है. इवन एल्गोरिथम भी इसके ऊपर काम कर रहा है. सो हम करते ही है कि हम जो MCP सर्वर के बारे में सुना होगा, ए एजेंट्स के बारे में सुना होगा, तो सिंपली हम ए एजेंट्स का यूज़ करेंगे
एंड फंक्शन कॉल करेंगे एपीआई के थ्रू, एपीआई कॉल करवाएंगे ब्लॉकचेन्स के जो सर्वर जो भी एपीआई की मैं N10 पे करता हूँ और या N10 तो कुछ खैर चीज़ों भी N10 हम करवा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ सिक्योरिटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तो जब हम क्लास में होंगे तो उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू। आई थिंक बेसिकली हम N10 यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बेसिकली ये एल्गोरिथम का सेशन है। हम यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, सब चीज़ें पढ़ाएंगे, जी जी, लेकिन N10 अगर आप कर रहे हैं N10 के ऊपर, N10 अब बेसिकली न्यू फीचर आया है, आई थिंक लास्ट वीक आया नो कोड एआई एजेंट्स बनाने के लिए। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी ड्यूरिंग जर्नी हम आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ा रहे होंगे। जी बस मैं ये चाहता हूँ कि ना हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं एआई जन को। N10 तो मैंने सीखा हुआ मसला नहीं। हाँ वो तो खैर हम आपको बताएंगे किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो फिर जी नेक्स्ट जी सेशन में बात करते हैं। जी, So thank you. guys, as you're asking questions, please do introduce yourself as well. And hopefully that answered your question as well, Bakr. जी जी, थैंक यू। All right. I've also shared the developer portal in the chat. It's also available on your emails. So do explore that. So yeah. Do we have more questions, guys? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. It's me Abdul Moeed Ahmed from Islamabad. मेरे एक क्वेश्चन Okay. था कि एल्गोरिथम फ्यूचर में फीस रिड्यूस कॉस्ट फंक्शन है, इसको किस तरह मैनेज करेगा? यानी कि जब प्राइस बढ़ जाएगी एल्गोरिथम की तो कॉस्ट, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो इसको किस तरह मैनेज करेगा? यही प्रॉब्लम है जो सारी चेन्स में आ रहा है बार बार। अच्छा, बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन इट। आई थिंक ये लोग एक फीस जो है फिक्स कर देंगे डॉलर अमाउंट के अंदर, कि फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त अगर 0.001 है तो उस टाइम उसको फिक्स कर देंगे। अब वो चाहे एल्गोरिथम का प्राइस जितनी भी ऊपर चले जाए, तो वहां पर आई थिंक ये लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं ये लोग, तो मे बी पॉसिबल है इन फ्यूचर ये लोग उस प्राइस को फिक्स कर देंगे आई थिंक। ठीक ठीक। Go ahead, Adil. You can ask your question. Hello, this is Mohammad Adil from University of Agriculture, Faisalabad, and I am pursuing my BS in Computer Science. This is my 7th semester. I have several questions about blockchain. जैसा कि हमारे पास टोकनाइजेशन को यूज़ करने की बात आती है कि हम किसी टोकन को ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं फॉर यूटिलिटी, उसमें तो ज़्यादातर स्टेबल टोकन यूज़ हो सकते हैं। अगर आप बात करें एल्गोरिथम या किसी और इस तरह के जो बेसिक कॉइन्स होते हैं ब्लॉकचेन के, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी नहीं है और ये टाइम टू टाइम अपना चेंज करते रहते हैं वैल्यू, तो हम इनको एज अ स्टेबल एसेट कैसे यूज़ कर सकते हैं? Okay, so something that Algorand has been very prominently working on is stable coins. And I think I'd like Yazi bin Fahad to explain that a little bit more as well. अच्छा, बेसिकली होता क्या है, ये जो एल्गो है ना, ये बेसिकली ये काम करता है एसेट की तरह, लाइक गोल्ड एक एसेट है, सिल्वर एक एसेट है। तो बेसिकली ये एसेट की तरह काम करते हैं जिसकी प्राइस मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जाती रहती है सम टाइम। देन अगर अब बात होती है जैसे आप बात कर रहे हैं स्टेबल कॉइंस की, बात होती है स्टेबल कॉइंस की, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़े नाम स्टेबल कॉइंस में आते हैं वो एक USDT है, एक USDC है और तीसरा डाई है। तो एल्गोरिथम के ऊपर जो मिंटिंग होती है स्टेबल कॉइंस की, वो लोग जो इस वक्त कर रहे हैं वो लोग USDC की कर रहे हैं। तो आप जब USDC ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे USDC ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको गैस फी पे करनी होती है। तो वो आपको गैस फी जो है वो एल्गोस के अंदर पे करनी होगी। यू मस्ट हैव एल्गोस जब आप मुझे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एल्गोस है ना, जब कोई माइनर ब्लॉक को माइन करता है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे एल्गोस मिलते हैं। तो बेसिकली ये एक एसेट्स की तरह काम कर रहा है। या सो इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि
पाकिस्तान में ही कुछ लोग हैं, जैसे कि यासीब है, मैं हूं फहद गौरी, तो हम लोग DSC प्रोटोकॉल बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान का या एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे जो आपका सवाल था आदिल, शायद आपका था कि स्टेबिलिटी नहीं होती, तो DSC प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान में लॉन्च होगा उसमें ये सारे मसले नहीं होंगे। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं लिंक पे, तो आप उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसा कि हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें अगर हम लोकली बात करें किसी वेबसाइट्स वगैरह की, ठीक है, उसमें हम होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे एक प्रॉपर सर्वर और डाटा सेंटर्स होते हैं। तो क्या ब्लॉकचेन में भी ऐसा कोई सीन है, या फिर हमारे पास जो नोड्स होते हैं वो ही एज अ डाटा सेंटर काम करते हैं? सॉरी, एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछेगा आपने? मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम सेंट्रलाइज्ड एरिया में बात करते हैं वेब 2 की, ठीक है, इसमें अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है उसमें हम होस्टिंग परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बैक एंड पे सर्वर्स होते हैं जो कि उसको होस्ट करते हैं, या फिर हमारे पास डाटा सेंटर्स होते हैं। तो क्या ब्लॉकचेन में भी डाटा सेंटर्स काम करते हैं, या फिर जो हमारे पास नोड्स रन करते हैं वो एज अ डाटा सेंटर होते हैं? देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रन होते हैं वो अगर एल्गोरेंड के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो AVM मशीन के ऊपर होते हैं, एल्गोरेंड वर्चुअल मशीन के ऊपर। अब आप देखें, अगर आप बात कर रहे हैं क्लाउड साइड पे, तो हम जब भी कोई सर्वर की बात करते हैं तो हम क्लाउड की तरफ हमें जाना पड़ता है, हम एक क्लाउड लेते हैं हर वक्त चलाने के लिए। लेकिन जब बात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की आती है ना, तो इधर मल्टीपल नोड्स होती हैं, अगर एक नोड बंद भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली वो जो रन होते हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं, और ब्लॉकचेन के जो नोड्स हैं वो मल्टीपल लोग जो है उसको चला रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उसको चला रहे होते हैं। तो आई थिंक ये आंसर होगा आपके इसका। And just to add on to what Yazib said in very simple words, as you mentioned as well, वो nodes ही in a way data centers होते हैं in very simple terms. So पूरा data ना distribute हुआ होता है amongst all the different nodes. तो इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, अगर एज अ नोड्स जो हैं वो एज अ डाटा सेंटर्स काम करते हैं, तो जैसा कि आप देखते हैं बिटकॉइन माइनिंग है, ठीक है, उसके डिफरेंट नोड्स रन कर रहे हैं, तो जब उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, वो कम्प्लीटली माइन हो जाएगा, या इसी तरह किसी और चेन की बात कर लें, उसके जब कॉइन्स वगैरह और उसकी माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि नोड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोग बंद करना शुरू हो जाएंगे और वो ब्लॉकचेन एक टाइम पे डाउन आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंसेंसस जो है सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जो कंसेंसस, अगर हम इथेरियम के कंसेंसस की बात करें तो इथेरियम जो है अनलिमिटेड माइन होंगे। क्यों? जब जब ब्लॉक बनते जाएंगे, जब तक 2 इथेरियम माइन होते जाएंगे। इसी तरह एल्गोरेंड के अंदर है, जब जब ब्लॉक बनते जाएंगे उस वक्त तक एल्गोस माइन होते जाएंगे। अगर हम बिटकॉइन के कंसेंसस की बात करते हैं तो बिटकॉइन का कंसेंसस ऐसा लिखा गया है कि 21 मिलियन 21 मिलियन के बाद वो और माइन नहीं हो सकते, और वो कंसेंसस चेंज भी किया जा सकता है जब उनके जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हैं जब उसको चेंज करेंगे, जब उसके नोड चेंज होंगी। और उसके अंदर बेसिकली, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर अभी हार्ड फोर्क भी हुआ है और इथेरियम के अंदर भी हार्ड फोर्क हुआ है, और एल्गोरेंड की अच्छी बात यह है कि अभी तक एल्गोरेंड के अंदर हार्ड फोर्क नहीं हुआ है। इसके अंदर अभी तक शुरू से लेकर अभी तक एक ही सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि नोट्स खत्म हो जाएंगी। अगर एल्गोस माइन होना बंद भी हो गया तो वैलिडेटर्स तो होंगे ना, जो ट्रांजैक्शन के ब्लॉक बनाएंगे। फिर जब ट्रांजैक्शंस के ब्लॉक्स बनेंगे तो उस पर जो फी चार्ज होगी, तो फी के तौर के ऊपर उनको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो बेसिकली ये सब चीजें, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये बंद हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्वेश्चन कर लूं? जी जी, बोलो। जी, मेरा नाम अहमद अली। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एल्गोरिथम अभी जो पाकिस्तान में है, इसमें किसी इंडिविजुअल का कोई रोल है, या उन्होंने कोई, मतलब बिलाल बिन साकिब जो अभी मिनिस्टर है बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन के, उनका कोई रोल है या किसी इंडिविजुअल का रोल है? और अभी आया है तो एल्गोरिथम की क्या, मतलब गोल्स है, मतलब पाकिस्तान के आवाम के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, ब्लॉकचेन? So
let me just give you an overview. Algorand abhi Pakistan mein aaya hai to create an entire ecosystem of blockchain developers around it, to increase, you know, the awareness and the education about Algorand, about blockchain, about Web3 in itself. So it's not just, you know, one single individual working towards it. There's an entire team working towards it. You know, including people from Algorand Foundation, including people in Pakistan, including, you know, so many people. And the goal eventually is to create some sort of awareness, because specifically Pakistan, you know, as you all must know, hum log ne share bhi kiya hua hai, Algorand has also shared, it's, you know, it comes in the top 3 in terms of nodes. So Pakistan has shown a lot of promise. We have around 40 million developers in Pakistan, and we have a digital, you know, youth natives of around 140 million, who all have the potential to grow with Algorand. So we want to bring this opportunity for the people of Pakistan to really create an ecosystem and start shifting and bringing that technological evolution in Pakistan as well. So that's basically the long-term goal. I hope that answers your question. Emmett? जी मैम, ओके, थैंक यू. Can you? No worries. Do we have any other questions? Let's raise our hands and just see how many questions we have. All right. So I don't think we have any more questions. If you guys do, the WhatsApp group is open for you all. आपके पास कोई डालो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी help चाहिए हो. Okay. Let's take one last question from you, Bakar. Do you have a question? वही मेरा भी क्वेश्चन था कि फीस क्या बता, इसकी फीस बढ़े या ना बढ़े. You were a Yes, please. little unclear. मेरा भी सेम क्वेश्चन था कि इसकी फीस बढ़ेगी Algorand की गैस फीस या नहीं. As Yazib also mentioned, Algorand hopefully is working towards having some sort of, you know, a set fees. So even if Algo की price बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है, gas fees हमारी इतनी नहीं बढ़ी होगी. So hopefully that does answer your question. We'll be, you know, exploring more as we proceed forward with the fellowship as well. जी. So just to wrap up, I would love if you all, you know, post about these sessions on your social media. We would love to interact with those. Tag us, you know, you have our socials, you have our group to ask any sort of question. LinkedIn hai, Twitter hai, X hai, Twitter, X, same thing. Instagram hai, post stories about it, make videos about it, post posts about it. You know, we would love to see you guys engaging and learning. We would love to know what you guys have learned. आप लोग के पास कोई questions हो तो obviously WhatsApp group, feel free to ask. Completely open channel hai. And as for the Para Wallet question, one last answer I'll give. We're working on, you know, bringing it to Pakistan as well. So don't worry. Hopefully that will also be coming soon. So the Para Wallet MasterCard, hopefully that'll be coming in Pakistan soon as well. As we expand with Algorand. I think Mehdi wants to ask a question. Mehdi, please ask. Do you have a question? Mehdi has a question, I think. He raised the hand. अच्छा, जहाँ तक recordings की बात है, Moiz, if you check your email, I've sent a drive link to all of you. So usme session wise, week wise, all the recordings, all the presentations, everything would be uploaded over there. So don't worry, you guys will have access to all of that. I don't think Mehdi also has a question. So let's wrap up this session now. Thank you so much everyone for joining. I hope you had a good session today. I hope it gave you you know an overview कि आप लोग किस तरीके
प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं एल्गोरिथम पे, ब्लॉकचेन पे किस तरीके के कर सकते हैं, किस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर कंट्री. So yeah, thank you so much everyone for joining, and Allah Hafiz.